Good morning, students. So we will continue the discussion which was going on from yesterday of the phase diagram, right? Now, as we studied yesterday, the Gibbs phase rule, which is called as F is equal to C minus P plus 2. This is applied for the water system. And we know that when it is applied for the water system, so we can have the degree of freedom can be bivariant system, univariant system, or invariant system, or zero variant system. So when we have water and vapor, so we have three phases, that is solid, liquid and gases. तो ये तीनों phases का जो टेम्परेचर और प्रेशर पे की वजह से जो इफेक्ट होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं, एंड दिस इज शोन बाय अ फेज डायग्राम. So as we were discussing, we have labeled these curves with some initials. So can you tell me what is the triple point it is denoted as? Which symbol? Anyone? Have you drawn the yesterday's diagram in your books? O. Yes. Okay. It is represented as O. O. Okay. This is O. Then this curve is O. A. OA. Fine. I hope you are drawing along with me if you have not drawn before. So this is curve OA. Then this is curve O. OC. OC. Very good. This is curve OC. And this is curve O. B. OB. B. OB. We denote it as OB. Fine. Then we have, in this we can see we have three areas. Which are the three areas? Area COA. Area COA is of what? Liquid. Liquid. Area COA is of liquid phase. Area COB is of solid, and area AOB is of gas. So we have three areas. Now, in these three areas, what is degree of freedom? Suppose if I take this area COB, what is the degree of freedom? Yesterday we have discussed how much is the degree of freedom over here? 2. 2, right? Degree of freedom is 2. How do we get the degree of freedom? F is equal to 2. We apply the Gibbs phase rule equation. minus P plus 2. F is equal to C minus P plus 2. So when you apply this, F is equal to C minus P plus 2. So how much is C value? How much is the component? 1. So component is 1 minus. How much is 1? Is this here? 1. In the area, we have only one phase, which is 1 plus 2. So 1 minus 1 plus 2 is equal to 2. तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मुझे कोई पॉइंट एरिया में स्पेसिफाई करना है तो मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट, दो पैरामीटर जानने की इंपॉर्टेंट है. दैट इज आई शुड नो द टेम्परेचर ऑल्सो एंड आई शुड नो द प्रेशर ऑल्सो. देन ओनली वी कैन डिटरमाइन अ पॉइंट इन दिस एरिया. तो जिसमें दोनों भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. So this will be followed for all the areas. So in this area also, in the liquid area, what is the degree of freedom? 2. 2, right? So in this case also, it will be the same as it was there for solid. Degree of freedom is 2. And also in the gases phase, F is equal to, in the area AOB, the degree of freedom is 2. I hope it is clear to you. Now, we will look forward to the boundary lines, right? Now, which are the boundary lines? Or we can say the curve. We have curve OB, curve OA,
and curve OC. So these are the three boundary lines. So on this boundary lines, right, on this curve, how much is the value of f? F is equal to 2. now. Let's see. In the boundary line, if I apply Gibbs phase rule equation, f is equal to c minus p plus 2. So how much is the component? What is the value of 1. component on the boundary line? 1. Okay, so component is 1 because we are studying one component system. So in this component will be 1 minus. How many phases we have? Now this boundary line is between which two phases? Solid and gas. Solid and gas. Same way curve OB or boundary line OA is between which two phases? Liquid and gas. Liquid and gas. So on the boundary line, how many phases are there? 3. 3 phases. 2. How? No, no, 2 2. phases. ना see, ये जो है बीच की दीवार है between the two phases. So we have 2 phases. Zero. So how many? 1. How much is the degree of freedom? 1. 1. 1. 1. So what it tells you, the degree of freedom is 1. This is satisfied by Gibbs phase rule. तो इसका मतलब है सपोज मुझे अगर प्रेशर पता है, बाउंड्री पे मुझे पॉइंट लोकेट करना है और मुझे प्रेशर की वैल्यू पता है, ये प्रेशर कितना है, तो कैन आई फाइंड आउट द टेम्परेचर? Yes, ma'am. Yes, correspondingly on the graph, I can find out the temperature. It is not necessary that we should be told what is the data of temperature. So in the boundary line, जहाँ पे भी lines होते हैं, अगर मुझे कोई एक पैरामीटर पता होगा तो मैं दूसरा पैरामीटर correspondingly ग्राफ से फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो इसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द गिब्स बेस रूल आल्सो f is equal to 1. So how much is the degree of freedom for the 1. boundary line? 1. तो सभी जगह पे सेम ही एप्लीकेबल होगा. तो इवन in this boundary line we have OA is equal to, sorry, F is equal to 1. Similarly for OC, boundary line OC, F is equal to 1. So when you explain the phase diagram, you have to explain that in the phase diagram there are 3 areas. Which are the 3 areas? The area is BOC, which is of solid, BOA, which is of gas, and AOC, which is of liquid. In the areas, the degree of freedom is 2. Now, how you will find out the degree of freedom is 2? You will explain by using Gibbs phase rule equation. So, according to the Gibbs phase rule equation, F is equal to C minus P plus 2. So, in the areas, we have component 1, phases is 1, plus 2. Therefore, degree of freedom is 2. Therefore, it is satisfied by the Gibbs phase rule. Then, same it is applicable for the other areas also. The second one is boundary lines, or we can say curves. So we have curves OB, we have curve OC and curve OA. So on the boundary line also, Gibbs phase rule, if we apply Gibbs phase rule equation, F is equal to C minus P plus 2. Then on the boundary lines, we have curve, we have component is 1. The phases is a 2 because it is a boundary between the two phases. So the phases are 2 plus 2, therefore degree of freedom is 1. It means on the boundary line, suppose we have to locate a point, then only one parameter is sufficient to be known as the corresponding parameter can be located from the graph. Right. Now, this was the starting explanation of the area and the boundary lines. Now we will see what are these curves and how it is explaining the effect of the pressure and temperature on the water system. Now, this point O, the point O which is here, this is called as the triple point. As we can see, all the three curves meet at the point O.
and this point is called as the triple point. Okay, this is called as the triple point. This is called as the triple point, where all the three phases, तीनों भी phases, solid, liquid और gases हमें मिलते हैं. Right now, where do we get this triple point? At what temperature? This triple point is obtained at a temperature of 0.0078 degrees Celsius, 0.0078 degree Celsius, and यहाँ पे जो pressure होगा, the pressure is, this is the dotted line that I am drawing. The pressure is 4.58 millimeters of mercury. The pressure is 4.58 millimeters of mercury. At a point, we have all the three phases exist at a particular temperature, that is 0.0078, and pressure of 4.58 millimeters of mercury. Now, as we go on increasing the pressure, temperature, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट से आगे, तो यहाँ पे तीन फेजेस है. जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगी, अभी कितने फेजेस रहेंगे फिर? Yes, students. At this point, we have three phases. कौन से three phases है? Solid, liquid and gas. जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगी, कितने phases रहेंगे? Two. Two phases. Which are the two phases? Gas and liquid. गैस एंड लिक्विड. बराबर. मैं जैसे टेम्परेचर हम टेम्परेचर जैसे बढ़ाते रहेंगे, ज्यादा उसको हम हीट करते रहेंगे, तो कौन सा फेज जो है वो डिमिनिश हो जाएगा? सॉलिड. सॉलिड. बराबर. Solid. सॉलिड जो है कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द सॉलिड जो फेज है वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और हमारे पास दो फेजेस रहेंगे, दैट इज लिक्विड एंड गैस. फिर जैसे हम टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा एंड वी रीच टू अ टेम्परेचर फॉर अराउंड 374 डिग्री सेल्सियस. तो एट अ टेम्परेचर ऑफ 374 डिग्री सेल्सियस कौन सा फेज एग्जिस्ट होगा? Liquid Gas. gas. Only gas. Liquid. Right. Only gases phase, that is only vapors phase रहेगा, and this temperature is called as the critical temperature, wherein only in the critical temperature the only one phase which will exist, that is called as the vapor phase. Okay, so this is called as the critical temperature. Now, this critical temperature, that is 374, पे जो pressure होता है, the pressure is, ये जो pressure correspondingly जो pressure होता है at this point, that is the critical pressure, is at a pressure of 218.5 atmospheric pressure. तो ये temperatures आपको याद रखना है. How the graph tells you. Where do we obtain this temperature and this pressure? So we obtain only one phase at a temperature of 374 degrees Celsius, which is called as the critical temperature, and the pressure is 218.5 atmospheric pressure. तो ये जो कर्व है जहां पे हमें एक फेज दिखता है एंड तक, दैट इज द वेपर फेज. तो ये कर्व को क्या नाम देंगे?
ये कर्व को क्या नाम दे सकते हैं? पैराबोलिक। ये कर्व को मैं मतलब इसको नहीं बता रही, नॉट लाइक मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेस नहीं करना है। ये कर्व पे हम कौन से फेज का स्टडी कर रहे हैं? Liquid and gas. हाँ, लिक्विड एंड गैस। तो एंड में आपको कौन सा स्पेस मिल रहा है? Liquid. एंड में gas, Gaseous. Gas. Gas. गैसियस फेज ना, वेपर। तो हम लोग वेपर्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ट्रिपल पॉइंट टू द वेपर फेज स्टडी कर रहे हैं। ये ग्राफ से, ये कर्व से हमें ये पता चलता है कि ये जो तीनों फेजेस होते हैं, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, तीन में से दो फेज रहते हैं और एंड में जो है हमें वेपर्स मिलता है। सो दिस कर्व इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन कर्व। Okay, this is called as the vaporization curve. I'm not writing it completely because it will be not feasible for me to write out. So this is called as a vaporization curve. Okay. Now, so this is one curve that we have studied, where the temperature has been increased to 374 degrees Celsius. अब ये ट्रिपल पॉइंट से हम नीचे जाते हैं, downwards, right, where the temperature is decreasing, okay, and the pressure is increasing. Now at the triple point we have 0. Triple point is at the point O, which is the triple point. Now ये ट्रिपल पॉइंट को जैसे हम नीचे नीचे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा? अभी ट्रिपल पॉइंट पे मेरे पास Solid and gas. हाँ, ट्रिपल पॉइंट पे कितना फेजेस है मेरे पास? 3. 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, Gas. राइट? तो जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करते जाऊंगी, कितना फेजेस रहेगा? 2. 2. कौन से 2? Liquid. Solid Solid and and gas. liquid. Solid and gas. सॉलिड एंड गैस या सॉलिड एंड लिक्विड? Solid and liquid. Solid and सॉलिड एंड gas. लिक्विड। Solid and liquid. Sorry, ma'am. बेटे क्या बोल रहे हो? गैस हम वेपर्स को कंडेंस करते हैं ना, कंडेंस करने के लिए हम Yes, टेम्परेचर yes, क्या yes. करते हैं? डिक्रीज करते हैं, राइट? तो जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? कौन से दो फेजेस रहेंगे? सॉलिड एंड Solid and liquid. Liquid. लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड होगा और फिर धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जाएंगे, इतना टेम्परेचर तक हम डिक्रीज करेंगे, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। At -273 degrees Celsius, what is obtained? Solid. Solid. Solid, completely solid, that is completely ice we are going to get at the point B. OB पे जो है, that is -273 degrees Celsius, there we are going to get completely solid. Or it is, or also it is called as absolute zero. कोई बता सकता है absolute zero कैसे हम कह सकते हैं? What do you mean by absolute zero temperature? Absolute zero is called as the 0 degree Kelvin. अगर हम केल्विन में करते हैं, ओके, सेल्सियस, Kelvin. So absolute zero is 0 degree Kelvin. That is plus 273 minus 273 को जब हम हैं, हम मिलता है absolute zero, that is 0. So in this we can see that the triple point जहाँ पे तीन phases है gets converted into a solid phase, one phase, that is a solid phase, and therefore this curve
is called as sublimation curve. This curve is called as sublimation curve. Now शायद ये सब खिचड़ी दिख रही होगी आपको, but try to understand. I will show you a better diagram after this slide. So this is called as the sublimation curve. Now अब आप लोगों ने तो बर्फ बनाया होगा फ्रिज में, तो कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी हमें ना अर्जेंटली हमको आइस चाहिए होता है और फिर हम रख देते हैं और मे बी हम आधा घंटे के बाद उसको निकाल देते हैं। तो हम चेक करते हैं आइस बना है कि नहीं बना है। तो हम कैसे चेक करते हैं उसको, आइस बना है नहीं बना है? क्या देखोगे, कैसे पता चलेगा कि कंप्लीटली, कभी कभी होता है ना आइस कंप्लीटली बना नहीं होता, तो हम कैसे देखते हैं उसको? अगर वो कंप्लीटली बना नहीं होता है तो क्या ट्रांजिशन होता है, क्या फेज होता है? सॉलिड एंड ऊपर में लिक्विड। क्या रहता है? हाँ बराबर, सॉलिड एंड लिक्विड रहता है। तो हम देखते हैं जब पूरी आइस नहीं जमी होती है, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आइस नहीं होता है, so that time we can see crystals. ऊपर का लेयर जो है वो आइस फॉर्म होता है, वो अगर हम ब्रेक करते हैं क्रिस्टल्स तो अंदर का लेयर, अंदर में क्या रहता है? लिक्विड, ठंडा लिक्विड रहता है, राइट? सो ये जो है, अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ कि यहाँ पर खिचड़ी हो रही है। फाइन, so as we can see we have talked here about the sublimation curve. The sublimation curve, that is OB, it is obtained at a temperature of what temperature? -273. -273 degree Celsius. This is the sublimation curve. Now, before the sublimation curve, we can get one curve. If the temperature and pressure is above this temperature and pressure, then we get one state which is called as a metastable state, but it is not a completely state, which is called as a supercooling state. Now, what do you understand as supercooling state? ये curve को नाम दिया है OA dash. Now, OA dash is a metastable state where the ice has not the liquid has not completely converted into ice. पूरी तरह ice में convert नहीं हुआ है, तभी आपको क्या दिखते हैं? आइस के क्रिस्टल्स दिखते हैं। और आइस के क्रिस्टल्स अगर हम निकाल देते हैं तो हमें बहुत ही कोल्ड वाटर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द सुपर कूलिंग लिक्विड। और जैसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे और उसको ठंडा करने के लिए और एक आधा घंटा या 1 घंटा रखते हैं, then that gets converted into completely ice. So this curve, which is called as the metastable curve, which is called as the OA dash, which is called as the supercooling liquid. Fine. So this is called as the second curve, that is the sublimation curve. Now at the triple point, तो ट्रिपल पॉइंट के अभी हम तीसरा कर्व देखेंगे। तीसरा कर्व जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? As we can see, the temperature is what? Temperature क्या हो रहा है? Is slightly decreasing and pressure क्या हो रहा है? Pressure is increasing, right? So at the point O, ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास तीनों फेजेस है, आइस, वाटर एंड वेपर। तो जैसे मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो कितना अभी हमारे फेजेस होंगे हमारे पास? 3. At the triple point there will be 3 phases. फिर जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, 2. what will happen? 2. Only 2 phases. 2 phases है। और वैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो at a critical pressure of around 218, what will be, which phase will exist? Gas phase. solid Gas phase, phase मिलेगा आपको? लिक्विड। हाँ, आयशा को गैस सॉरी गैसेस बहुत पसंद है। देखो हम यहाँ पे ना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ओके, और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। देखो अगर सपोज हम बर्फ लेते हैं, ओके, और बर्फ को हमको ये करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और हम लोग उसको प्रेशर दे रहे हैं, हाथ से अगर हम प्रेशर देते हैं
तो कन्वर्ट होता है क्या ना लिक्विड फेज में? यस होता है मैम. होता है ना, बिकॉज इवन द प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं हम तो प्रेशर के वजह से भी टेम्परेचर the pressure is increasing, then there will be two phases, and after that what is remaining is only one phase, that is the liquid phase. So this is called as melting point curve. ये जो curve है, this is called as the melting point curve. Okay, so we have three curves, that is vaporization curve, sublimation curve, and melting point curve, right? So with this diagram, we come to know about the triple point and the behavior of the water phase, ice phase, and the vapor phase at different temperatures. Okay, so now all of you, what you have to do, you have to take out your notebook and draw this diagram without seeing. Okay, और एक temperatures आपको highlight करना है यहाँ पे. This is the 100 degrees, that is the boiling point of water. 100 degrees के साथ साथ आपका pressure जो है 1 atmospheric pressure, जो हम इसको लेबल करते हैं. और क्रिटिकल ये जो है ट्रिपल पॉइंट के पहले हम 0 डिग्री दिखाएंगे और सेम प्रेशर इज 1 atmospheric pressure. This you have to show. Fine. So all of you, please open your notebooks. You will draw the diagram. I will ask anyone of you to on the video and show me that diagram. No cheating, please. Let's see all of you कितना आपको याद रहता है. No cheating, I said. चलो, I'll give you 5 minutes to draw this diagram. Very, very important question for 5 marks. Have you started drawing? मैम कौन सा? जो अभी मैंने वन कंपोनेंट सिस्टम का डायग्राम पढ़ाया ना अभी, फेज डायग्राम, दैट वन.